80 former bureaucrats have written an open letter on the murder of police officer in Bulandshahr. In the letter, the ex-civil servants seek UP Chief Minister Yogi Adityanath's resignation and emphasize how the killing of a police officer is a grave offence. And even after 3 weeks, the Uttar Pradesh police have still not arrested all the accused. So this is a letter coming from top bureaucrats, ex-bureaucrats, who are now questioning Yogi Adityanath for inaction over the killing of a police officer in Uttar Pradesh. Amir Haq joining us on the phone line. Amir, so serious concerns have been raised on the UP government, its functioning, the fact that a police officer was killed with such impunity, and there seems to be no urgency on the part of Yogi Adityanath government to get down to the killers. Well, Afrida, clearly, and this is a very damning letter that is now in the social media space, openly being shared now, wherein questions have been raised on the intentions of the UP government and the Chief Minister, Yogi Adityanath, and the kind of narrative that the government has tried to build up around the entire Bulandshahr violence case, because here we have police officers who are not ready to investigate and probe threadbare the case of murder of police inspector and the factors leading towards violence. And the very fact that only 2 out of the 27 named accused and conspirators of Bulandshahr violence case have been arrested till now. But the focus remains on the incident of cow slaughter, as the government had put out in its narrative and press releases earlier, that the focus should remain on cow slaughter and curbing incidents of cow slaughter. So this is something that has been raised by these 83 retired bureaucrats, many of whom are IAS, IPS officers, as well as Indian Foreign Services and Forest Services officers. And they clearly say that this seems to be a narrative which has been put in place by the Yogi government only to so that it suits their political agenda of divide and rule, and creating a communal divide so as to keep minorities aloof from very strong words, Amir, and we are in fact running those lines on our screens right now, because this letter calls Yogi Adityanath the high priest of bigotry in this country, and they're demanding immediate resignation. The letter says under Yogi, hooliganism and thuggery have been mainstreamed. So there's a normalization of, what we saw, this kind of mob killings that are happening. And in this letter, they also say that principles have been subverted. CM acts as the high priest of the agenda of bigotry. Now, nothing could be more shameful, because like you said, this has come from retired bureaucrats, people who run administration in various states. Rakesh Tripathi of the BJP joining us on the phone line. Mr. Tripathi, if you pay attention to this letter, and it's not just this letter, there's a general criticism and there's a growing sense now that there seems to be no urgency or political intent in Uttar Pradesh to get down to the killers of Inspector Subodh Kumar Singh. Why is that so? 13 लोगों की गिरफ्तारी का हो जाना भी अगर लगता है कि इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई नहीं हो रही है, तो मैं मानता हूं कि इस कार्रवाई को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस बिना किसी दबाव और बिना किसी प्रभाव के निष्पक्षता से पूरी त्वरित गति से इस मामले में कार्रवाई कर रही है। जो भी नामजद आरोपी हैं, उन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, छापेमारी कर रही है, और 13 लोग अब तक इसमें अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनको न्यायिक अभिरक्षा में इस समय भेजा जा चुका है, कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया गया है। बावजूद इसके ये कहना कि इसमें कुछ लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है, मैं मानता हूँ ये न्याय संगत नहीं है। पुलिस को नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये देश के जो आला अधिकारी थे, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला है, उन्होंने कहा है, उनका ये ऑब्जर्वेशन है। तो इसलिए ये कहना कि मीडिया ने इसको बढ़ा चढ़ा के बोल रखा है, ये गलत होगा। 2 सवाल रेज हुए हैं, मैं आपको सवाल बता दूं। एक ये कि आपकी जो सरकार है, उनका फोकस है काउ प्रोटेक्शन, और ये जाहिर हो चुका है क्योंकि आपने पुलिस ऑफिसर्स को सभा ऑर्गेनाइज करने के निर्देश दिए हैं। दूसरी बात, ये जो इनमें आरोपी है, उनमें जो पॉलिटिकली एफिलिएटेड है, जो बीजेपी और वीएचपी के साथ जुड़े हुए हैं, उनको नहीं गिरफ्तार किया गया अभी तक। ये क्यों? देखिए, 2 अलग-अलग बातें आपने कही हैं, मैं दोनों बातों का बारी-बारी से जवाब दूंगा। जी बिल्कुल दीजिए। मैं मीडिया को आरोपित करने का काम नहीं कर रहा हूं। इस पूरे मामले में जो भी पक्ष रखे जा रहे हैं,
मैं मानता हूं कि उनके अपने पॉलिटिकल व्यू हो सकते हैं। इन पक्षों को रखे जाने के बजाय पुलिस की कार्रवाई को देखा जाना चाहिए और पुलिस ने जिस प्रकार की कार्रवाई इस पूरे मामले में की है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि पुलिस इस पूरे मामले में निष्पक्षता से कार्रवाई कर रही है। जहां तक काउ स्लॉटर्स को पकड़े जाने, काउ स्लॉटर्स को बंद करने के लिए शपथ दिलाने का मामला है, ये एक प्रिवेंटिव मेजर्स है और ऐसे कोई भी प्रिवेंटिव मेजर्स उत्तर प्रदेश की पुलिस पहले भी लेती रही है। किसी भी आपराधिक घटना घटने के बाद दोषियों को धरपकड़ करना, उनको गिरफ्तार करना ही केवल पुलिस का दायित्व नहीं है, बल्कि आपराधिक घटनाएं न घटें। ये एक सच्चाई है कि हिंदू माइथोलॉजी में गाय को गाय की पूजा की जाती है और उस नैरेटिव को आप काफी बढ़ावा दे रहे हैं कि गाय की पूजा होनी चाहिए, गाय की रक्षा होनी चाहिए। ये नैरेटिव आपका प्राइमरी लग रहा है इस वक्त, और जो गिल्टी को पनिश करने का एजेंडा है वो कहीं खो गया है। नसीम सलीम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑन द फोन लाइन। मिस्टर सलीम, कैन यू ऑल्सो come into this conversation and help us understand from your perspective what are the major concerns here? Because we are talking about a complete inefficiency on the part of the UP government and the UP police on getting down to the killers of a police officer. And now there's a strong letter coming from ex-bureaucrats highlighting some major issues, even going to the extent of calling Mr. Yogi Adityanath the high priest of the agenda of bigotry. See, I'll tell you, it's a very sad day for as far as Uttar Pradesh is concerned today, because when the bureaucrats, they are the ones who run and execute all government decisions and policies which are set out, whether it's in legislation or in other platforms. If the bureaucrats feel that the government is not working and they are the ones who represent the government, then it's a very sad day for our democracy and our constitution, because that is the essence of the message. Obviously, जहाँ तक भाजपा का सवाल है, मैं आपको बता दूं, इनका मुद्दा लोगों का ध्यान बटाने का है और हर चीज में जो मेन मुद्दे से हट के काम करने का। अभी फिलहाल क्या कार्रवाई होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि जो शहीद हो गए, मैं तो शहीद इस्तेमाल करूंगा वर्ड क्योंकि वो हमारे रक्षक के तौर से काम करते हैं, पुलिस ऑफिसर जो शहीद हो गए, उनके बारे में उन पे जांच होनी चाहिए, ना कि कोई और मुद्दे पे। देखिए, I don't want to get into the religious part of it, but it's very simple. जो कानून अपना काम करता है उसमें बीच में इनको नहीं पढ़ना चाहिए। शुरू से लेके अब तक पिछले 1.5 साल में। I got your point. Let me bring in Meera Borwarkar, who is a retired IPS officer, one of the signatories of this particular letter that is demanding immediate resignation of UP Chief Minister. Meera Borwarkar, your views. I mean, first of all, tell us about what brought so many of you together to write this letter. What is your larger intention here? What exactly are you demanding? So first, I would like to clarify that we have no loyalties towards, we are not aligned to any political party. We just watch the developments as independent observers, and whenever we feel very strongly, only then we issue a letter. In this particular case, we felt attacking a police officer in uniform is the worst kind of crime, and it shows how bold have criminals become in UP, and how the state is being divided on communal and religious lines. We feel that in the name of holy cow, in the name of religion, there are definite attempts to divide the society, which is the worst kind of crime that can be committed against the Constitution of India. Okay. Since our group believes in the Constitution, and we felt enraged, we felt very disturbed at the developments regarding the communal divide which is taking place in Uttar Pradesh. Therefore, we demanded the resignation of the Chief Minister. Right. So, very important point you raised here, Meera Borwarkar, because you're saying that in the name of holy cow, there are attempts to violate the constitution, there are attempts to create division in the society. राकेश त्रिपाठी जी, आप जवाब देना चाहेंगे? ये हम नहीं कह रहे हैं, बहुत सीनियर आला अधिकारी है भारत सरकार के, जिन्होंने सर्व किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उनका ये ऑब्जर्वेशन है, ये इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स है, एक नहीं कई अफसर है जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया है कि एक पुलिस ऑफिसर की हत्या हो जाती है और उसको भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है यूपी में। नहीं, मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं जिन लोगों ने भी इस प्रकार का नजरिया रखा है कि उत्तर प्रदेश में गाय की रक्षा करना संविधान के पालन से परे होना है। मैं मानता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
उत्तर प्रदेश में गोवध निवारण अधिनियम लागू है। उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की गोहत्या पर प्रतिबंध है और अगर कहीं पर भी गाय की हत्या होती है तो उससे सांप्रदायिक तनाव फैलता है, उससे एक असहज स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें जानमाल का खतरा होता है। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस उसको रोकने का काम करती है तो ये कहना कि हम उत्तर प्रदेश में अपराध पर फोकस नहीं कर रहे हैं, ये पूरी तरह से गलत है। कहीं ना कहीं उन गो तस्करों के साथ खड़े होने का प्रयास है। राकेश त्रिपाठी जी, आज ये स्थिति हो गई है यूपी में कि यूनिफॉर्म में जो पुलिस अफसर ड्यूटी में है उनको मर्डर किया जाता है। क्या आप इस बात से नकार रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है? आज इतना गुस्सा क्यों है आला अधिकारों में, आईपीएस ऑफिसर्स में, रिटायर्ड ऑफिसर्स में? गुस्सा इसलिए है कि यूनिफॉर्म में जो बंदा ड्यूटी कर रहा है उसको इस तरह से मार दिया जाता है और उसके बाद एक्शन नहीं लिया जाता उन हथियारों पर। ये सवाल है, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं केवल 2 मिनट का समय मांग रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं कि कृपया अनइंटरप्टेड मेरा अगर जवाब सुन लेंगे तो मुझे लगता है कि मेरा जवाब पूरा हो जाएगा और आपके जो प्रश्न है उनका समाधान मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई बुलंदशहर में, जिस घटना में गोकसी का मामला सामने आया और गोकसी के बाद वहां पर उपद्रव और अराजकता की स्थिति हुई, जिसमें एक हमारे जाबाज पुलिस अधिकारी की शहादत हो गई और एक नौजवान भी उसमें मारा गया। इस पूरे मामले में 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज हुई है और दोनों ही एफआईआर में पुलिस ने गिरफ्तारियां की है। जिस मामले में अराजकता हुई, जिसमें हमारे एक जाबाज पुलिस अधिकारी की हत्या हुई है, इस पूरे मामले में अब तक 13 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और पुलिस नामजद एफआईआर दर्ज करके छापामारी लगातार कर रही है। बावजूद इसके ये कहना कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है, ये न्याय संगत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जिसमें गोकसी का मामला दर्ज हुआ था, इस मामले में भी अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। कहीं पर भी उत्तर प्रदेश में गोकसी का मामला होगा तो भी उसको हम प्रायोरिटी पर लेंगे और अगर कोई कानून से खिलवाड़ करने का काम करेगा तो दोनों चीज आपके लिए बराबर है, गांव की हत्या, गाय की हत्या और पुलिस अफसर की हत्या। मीरा भवरकर, would you like to respond to that? Because the BJP, it seems, is unapologetic about this, that cow protection is a priority and in some ways we get a sense that it is almost as important as protecting human lives. मुझे लगता है इसे एक सिंबल बना दिया गया है और देश को 2 भागों में विभाजित किया जा रहा है, माइनॉरिटी कम्युनिटी को और मेजॉरिटी कम्युनिटी को। और आप ये सोचिए कि एक ऑफिसर जो यूनिफॉर्म में है उसका मर्डर करना विद ए गन, विद ए हथियार, इससे बड़ी और अराजकता क्या हो सकती है? जो हम जब एक बार यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, हमारा ये रोल है कि हम लोगों की रक्षा करें। आप हमारे पे ही अटैक कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं इन यूनिफॉर्म ऑन ड्यूटी। Meera Bhavarkar ji, are you trying to say that the government is complicit in this because you are demanding the resignation of UP Chief Minister? Now, if you are telling us here that a police officer was attacked and the government is not acting in accordance with the speed and urgency that it should, are you in some ways telling us or suggesting that the government is not taking responsibility for this killing, not willing to take responsibility? What is your point? Okay, give me a minute. I'll explain. I feel there are 2 different issues. I am very confident that UP police will detect this case and the accused will be tried. But what we, our group, objects to is the atmosphere of division and communal division which is being created by the political leadership. So that is what we are objecting to. Today you will detect this case. You will hold trial, we are confident. But what about the division in the lines of minority and majority which you are creating in the state? It will take decades to recover from that. And because you as political leadership are creating this division of minority and majority, we advise that you please step down. Let the state be one state with forward-looking outlook than issues which divide families, which divide neighborhoods, which divide communities. Right. So in this letter, Meera Bhavarkar, you are saying in UP, principles of governance stand perverted. CM acts as the high priest of agenda of bigotry. Bulandshahr is a frightening indicator of the collapse of constitutional values. So are you being, you're sounding extremely alarmist at this point. Are you convinced that the situation is really that bad, that there is a breakdown of constitutional values? What has made you come to this conclusion, Meera Bhavarkar, today? Yes, it's not my individual conclusion. Many of us sat together, we discussed the situation, and only those officers who felt, yes, the situation has come to this stage that we should advise the CM to step down, only those officers have signed. And after
having in-depth understanding of what is going on in the state today. Right. Meera Bhawarkar, your observations are, of course, at this point in time come directly in context of Bulandshahr. But in the overall scenario, how difficult is it for police officers to operate? Because like you said, this is an environment, this is the kind of ecosystem which has been created. Are you today worried that it becomes increasingly difficult for people in uniform to operate when that is the kind of narrative that is perpetuated from the top corridors of the government? Yes, I definitely feel that the police officers also look up to what message they are getting from the establishment, from the government in power. And the message is that dividing the community on communal and religious lines is okay. And therefore, in the long run, it's going to harm not only minorities, but even majorities. You know, the Yes. Rule of law, you're breaking that down for your narrow political gains. The process of law you are challenging, uniform you are challenging, officers on duty you are killing. It can't be worse than this. So राकेश we are त्रिपाठी very जी, worried. क्या ये सही है कुछ narrow political gains, as Meera Bhawarkar is putting it, कुछ इलेक्टोरल गेन्स के लिए आप ये सब कर रहे हैं, आप समाज को डिवाइड कर रहे हैं, इस तरह का इम्प्रेशन लोगों में है और यही रिफ्लेक्ट हो रहा है आज जो चिट्ठी लिखी है आईपीएस ऑफिसर्स ने? मैं नहीं जानता कि इन आईपीएस आईएएस ऑफिसरों ने ये चिट्ठी किस पॉलिटिकल मोटिव के तहत लिखी है। मैं इतनी बात जरूर कह सकता हूं कि ये नैरेटिव जो सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि आज उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम सरकार कर रही है, ये पूरी तरह से गलत है। इसी उत्तर प्रदेश में हर सप्ताह में सांप्रदायिक दंगे की घटनाएं अखिलेश यादव की सरकार में हुआ करती थी। आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक संघर्ष की घटनाएं कहीं भी नहीं हुई हैं। बावजूद इसकी ये कहना कि हम सांप्रदायिक विभाजन कर रहे हैं, ये गलत है। बुलंदशहर के पूरे वायलेंस में एक बड़ा इज्तिमा चल रहा था जहां पर लाखों लोग इकट्ठा थे, एक समुदाय विशेष के। बावजूद इसके वहां किसी भी प्रकार की अपरिस्थिति नहीं बनी। ये दुर्भाग्यपूर्ण दुखद रहा है कि हमारे एक जाबाज पुलिस अधिकारी की इसमें हत्या हो गई, इसमें मौत हो गई, शहादत उनकी हुई। इस पूरे मामले में पुलिस ने नामजद एफआईआर दर्ज की है, उसमें गिरफ्तारियां की है। बावजूद इसके ये तय करना कि नहीं इसमें अराजकता की स्थिति है, कानून अपना काम नहीं कर रहा है, मैं मानता हूं ये ठीक नहीं है। कानून को अपना काम करने देना चाहिए और इस मामले में पूरे सीनियर ऑफिसर इंक्वायरी कर रहे हैं, एसआईटी गठित है, आईजी रेंज इस पूरे मामले को देख रहे हैं। पूरे मामले में गिरफ्तारियां हो रही हैं। बावजूद इसकी ये कहना कि इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, मैं मानता हूं ये न्याय संगत नहीं है। ये जांच को प्रभावित करने का प्रयास है और क्या कुछ लोगों को गिरफ्तार करवाने के लिए या कुछ लोगों को छुड़वाने के लिए इस तरह की चिट्ठियां लिखी जा रही हैं। मैं आरोप नहीं, जो प्राइमरी अक्यूज्ड है उसमें अभी भी काफी लोग हैं जो अरेस्ट नहीं हुए हैं और उनके वीडियो सर्कुलेशन में है, ये सबसे बड़ी बात है। मीरा भंवर, क्विक लास्ट वर्ड टू यू, बिकॉज टू बी फेयर, द यूपी डीजीपी हैज आल्सो मेड द स्टेटमेंट दैट वी वर एबल टू अवर्ट अ रायट। इट कुड हैव बीन अ मेजर riot and it's because of the efficiency of the police force that was averted. Are you willing to give that credit to the Uttar Pradesh police? See, I don't have first-hand information, but I am repeating that what the gentleman said just now. मैं भी तो यही कह रही हूँ कि कानून को अपना काम करने दीजिए, पर यूपी में ऐसा लग रहा है कि पुलिस अधिकारियों को कि आप ये कीजिए, वो कीजिए, ऐसा कीजिए, इस कम्युनिटी को फेवर कीजिए, इसको मत कीजिए, ये जो एटमॉस्फेयर है वो ना रहकर लेट द लॉ फॉलो इट्स ओन कोर्स, वो नहीं किया जा रहा। All right. Thanks so much for joining us, Meera Bhawarkar, and also Mr. Rakesh Tripathi for giving us your views, and Salim Nasir for joining the conversation as well.